Hello students, welcome to PS class. Hello students. So today we will discuss about isomerism. Okay. Now what is the definition of isomerism? When two or more compounds having same molecular formula but differ from each other in their properties, then the compounds are known as isomers and the phenomenon is known as your isomerism. Okay. Two or more compounds having same molecular formula but differ only in their properties. Now there is the different types of isomerism. Isomerism can be classified into two types. One is structural isomerism and another one is stereoisomerism. First of all, today we will discuss about the structural isomerism. That means the isomerism or the two or more compounds which differ in their structures. That is known as structural isomerism. So again, there is different types of structural isomerism can be classified into different types. Number one is chain isomerism. Second, position isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism. Okay, one by one we will discuss the definition by taking one or more example. Okay, now see here. Similarly, stereoisomerism also divided into two types. One is geometrical isomerism, another is optical isomerism. Here the stereoisomerism we will discuss after completion of the discussion of structural isomerism. Okay. Now, the next is chain isomerism. First of all, what is chain isomerism? When two or more compounds having same molecular formula, when they having same molecular formula but differ in their carbon chain length. Carbon chain length means the chain may be a straight chain or the chain may be a branch chain. Then the different compounds formed are known as your chain isomers to each other. For example, first of all, we will take one example. See here. A compound having molecular formula C5H12. Okay, a compound having molecular formula C5H12. Now see here, if a compound having molecular formula C5H12, that means it satisfies the general formula of alkanes. If you'll see CnH2n plus 2 and if you'll put n equals to 5, it becomes a C5H12. That means it is a alkane having 5 carbon atoms. But first of all, we'll write and the first compound, the carbon skeleton, and then we will see how many possible chain isomers are there. Okay, first number 1. If I'll write the 5 carbon skeleton like this, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now satisfy this 3, this is 2, 2, 2, this 3, 3 to 5 to 7 to 9, 3, 12. So C5H12. Now it is a straight chain having 5 carbon atoms, so the name is N-pentane. N-pentane. Okay, this is a straight chain. Now, how many branch chains are possible? If I write that means 4 carbon atoms in a straight chain, 1, 2, 3, 4, and 1, this is a branch. Okay, so all total how many carbon atoms are there? 5 carbon atoms. Now you satisfy this 3, 3, 1, 2, 3. Okay, now this is your, already we have discussed in your in our last class we have discussed, this is your iso compound, isoform. So this is known as your iso, 5 carbon atoms are there, so the common name of this compound is isopentane. Okay, the common name of this compound is isopentane. But what is the IPEC name of this compound? If you write 1, 2, 3, 4, so it is your 2-methyl. So it is your 2-methyl butane. 2-methyl butane. This is the IPEC name. Okay. Now, is there any branch chain is possible? Let us try. Okay. Suppose if I'll write 3 carbon atoms in a straight chain. Okay. And if I'll write a carbon, again that will come into the straight chain. But here also same case. But if I'll write 1 carbon here, 1 carbon here, all total 5 carbon atoms are there. And if you satisfy this, now see here, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12. So C5H12 satisfaction भी हो रहा है. Now this form is known as your what? Neoform. So what is the name of this compound? Common name is neopentane. Neopentane. And what is the IPEC name of this compound? 1, 2, 3. So in 2 position, 2 methyl groups are there. So 2, 2 dimethyl propane. Okay. N-pentane is your common name. Okay, it is your common name, and normal name, IPEC name is pentane. Okay,
So see here, a compound having molecular formula C5H12, a compound having molecular formula C5H12, it represents three compounds. One is pentane, another one is isopentane, and third one is neopentane, in which the N-pentane is a straight chain, but these two are branch chain. So these three are chain isomers to each other. So a compound having molecular number C5H12 represent how many chain isomers? Represents 3 chain isomers. Okay, in this way you can also by taking one or more examples you can also try. Now see here, another case is an important point you have to remember. Note, possible chain isomers of alkyl group can be determined by the formula 2 to the power n by 2, where n is your number of carbon atoms. So what is this? See here, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक कंपाउंड लिया था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 था. C5H12 इज ए अल्केन एक्चुअली, राइट. C5H12 इज ए अल्केन. बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोज मैं एक एग्जांपल लूँगी, बट दैट इज़ नॉट एन अल्केन, दैट इज़ एन अल्काइल ग्रुप. सपोज सेम ही हम लेते हैं C5H12 जो पेंटेन. इफ़ आई टेक द अल्काइल ग्रुप ऑफ दैट, सपोज इफ आई राइट C5H11, ओके. So it is your pentyl, right? C5H11 matlab what? One hydrogen is removed, so it is your alkyl group pentyl. So how many chain isomers are possible with the compound having molecular formula C5H11? So there is a formula to calculate the number of possible chain isomers for this alkyl group, right? So here 2 to the power n by 2. So 2 to the power n represents number of carbon atoms. Here n is equals to 5. So if I will write 2 to the power 5 minus 2, so is equals to 2 to the power q, which is equals to 8. That means a compound having molecular formula C5H11, देखो जब हम पेंटेन ले रहे हैं तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो रहा है, चेन आइसोमर्स. बट अब जब पेंटाइल कर रहे हो, टोटल हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? टोटल 8 चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल. चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल. Okay, so this is the formula or rule to calculate the chain isomers of different alkyl groups. Okay. Now next is second isomerism is your position isomerism. Now what is position isomerism? When two or more compounds having same molecular formula but differ in their position of substituent or functional group in the same carbon chain, then that is known as your position isomers. Okay, so let us discuss some examples. Suppose if I will take position of substituents or functional groups, means in the compound we have to take any functional groups or any multiple bonds or any substituent to show the change in position. Okay, suppose if I will write the compound having molecular formula C4H8, the compound having molecular formula C4H8. See here, C4H8 represents the general formula of CnH2n. CH2n is the general formula of what? Alkene, right? C4H, when n is equals to 4, it is your C4H8. Okay, now it means there is a presence of a double bond here. So let us try. Suppose first compound, first write the carbon skeleton 1 2 3 4. Okay, now in one position just put a double bond, and now satisfy this CH2 CH CH2 CH3 2 1 3 2 5 3 8. Okay, C4H8. Now what is the IPEC name of this compound? To know the position isomers, first of all we will write the IPEC name. So 1 2 3 4. So word root is but. Primary suffix position of double bond is 1 and primary suffix is ene for double bond. So but 1 ene. Okay. So similarly we have to change the position of the functional group. Here functional group is a multiple bond, double bond. So if I will write the same carbon, okay, now I will put the double bond here. Okay, satisfy this 3. This is 1 hydrogen 1. This is also 3. 3 3 6 2 8. Okay, now 1 2 3 4. So it is your what? But 2 en. Okay. Any other possible? No. Again if I will put here, again we will proceed from right to left and position also 1. So the compound having molecular formula C4H8 represents two position isomers. One is but 1 ene, another is but 2 ene. So these two are position isomers to each other.
Similarly, let us take another example. Okay, let us take another example by taking a functional group. Suppose another example. Suppose I will take a functional group. So suppose C3H7OH, or we can write compound having molecular formula, or you can write C3H8O. Okay, now see here, C3H8O, it represents what? First of all, we'll write the carbon skeleton 1, 2, 3. 3 carbon atoms are there. Okay, along with 1 oxygen is there. If I'll put 1 oxygen, now I will satisfy this. If I'll satisfy, this is 3, this is 2, this is 2. Oxygen is divalent. Again, I will put it hydrogen here. So that means 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8. So satisfies the molecular formula. Now what is the name of this compound? This is your 1, 2, 3. That means word root is prop, प्राइमरी सफिक्स an, अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का सफिक्स OL है, पोजीशन नंबर 1, सो प्रोपेन 1 OL. ई ओमिट होगा क्योंकि वावल में स्टार्ट होता है, सो इट इज अ प्रोपेन 1 OL. ओके, सिमिलरली एनी अदर पॉसिबिलिटी, इफ आई राइट 3 कार्बन एटम्स दिस, अगेन इफ आई पुट द ऑक्सीजन हियर, सेम कंपाउंड आ जाएगा. इफ आई पुट द ऑक्सीजन हियर 1 O एंड ये सेटिस्फाई दिस. ओके, सी हियर 3 3 6 to 8. Now in this case, if I'll write 1, 2, 3 IPAC name, in position number 2 the alcohol group is there. So what is the name of this compound here? The word root is your what? This is your prop, primary suffix an, position of alcohol 2 ON, so propane 2 ON. That means the compound having molecular formula, C3H7OH or C3H8O having possesses 2 position isomers. This is 2 position isomers. Okay, propane 1 OL, propane 2 OL. Similarly, by taking other substituents, जैसे 2 chloropropane, 2 bromone, 2 nitro, 3 nitro, ऐसे आप और डिफरेंट कीटो फंक्शनल ग्रुप लेके आप चेक कर सकते हो. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लेके आप पोजिशन आइसोमर के डिफरेंट एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाट इज द नोट हियर? एनी कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप, लाइक कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप मीन्स आपका एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है, सियानाइड हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, एक्सेप्ट योर कीटो ग्रुप. कीटो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के बाकी जो भी है आपका, किसी का भी पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है. ओनली कीटो ग्रुप जो कि कार्बन है उसी का ही पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल है, बाकी और किसी का पॉसिबल नहीं है. क्यों? बिकॉज दे आर चेन टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप. चेन टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका अगर कोई भी कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर है, सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर मैं ऐसे एक कंपाउंड लिखूँगी C डबल बॉन्ड OH, ओके, दिस इज योर कंपाउंड CH2 CH3, और यहाँ पे एक कंपाउंड ऐसे लिखूँगी CH3 CH CH3. तो आप सोचो, इसमें तो आपको पता है कि हाँ ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड वी हैव टू प्रोसीड फ्रॉम ऑलवेज. जैसे कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले उसको नंबर 1 देना, 1 2 3 राइट. सो दिस इज द व्हाट? प्रोप, प्राइमरी सफिक्स an, एल्डिहाइड एल, प्रोपानॉल. हियर ऑल्सो आपको लगेगा कि ये तो मिडिल में है, हम ऐसे जा सकते हैं. नो, दिस इज ए कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप. यू प्रोसीड फ्रॉम दिस साइड, गिव 1 नंबर 1 टू दिस फंक्शनल ग्रुप. ओके, so this is your 1 2 3, and in 2 position there is a methyl group. So you will write here the name of the compound is 2-methyl prop, primary suffix an, aldehyde Al, तो 2-methyl propanol. That means जो भी पोजीशन में आपका प्रेजेंस हो, आप ऑलवेज कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप मीन्स यू हैव टू गिव नंबर 1. अगर जहाँ पे प्रेजेंस रहने पर भी इसको अगर हम नंबर 1 दे देते हैं, इसका मतलब हमारा कार्बन कंटेंट जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसी का कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता. ओके, डू नॉट शो पोजीशन आइसोमरिज्म. बट कीटो कंपाउंड में आप फंक्शनल पोजीशन आइसोमरिज्म क्यों लिख सकते हो? आप देखो यहाँ पे अगर मैं कंपाउंड लिखूँगी, सपोज सी हियर दिस इज ए कंपाउंड 1 2 3 4 5. ओके, यहाँ पे मैंने कीटो फंक्शनल ग्रुप लिख दिया. अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे चेन, मतलब कंपाउंड लिखने चाहोगे तो वहाँ कैसे प्रोसीड करोगे? 1 2 3 4 5, बिकॉज यू हैव टू गिव लोएस्ट लोकेशन टू द कीटो फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज द करेक्ट वे. तो आपका पोजीशन 2 पे आया कीटो ग्रुप. अगर मैं ऐसे एक कंपाउंड लिखूँगी, राइट, वैसे ही 5 ये कार्बन है स्केलेटन. नाउ यहाँ पे आपको अगर प्रोसीड करना है तो 1 2 3
4 5। इसका मतलब 3 पोजीशन में आपका कीटो ग्रुप आ रहा है, 2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप था, 3 पोजीशन में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेम कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ओनली आपका पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंजेस। इसका मतलब कीटो फंक्शनल ग्रुप में आपका पोजीशन चेंज हो सकता है बिकॉज दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द चेन। सो एक्सेप्ट कीटो फंक्शनल ग्रुप और कोई भी कार्बन कंटेंट फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, next point is monosubstituted alicyclic compound do not show position isomerism. That is also correct. Monosubstituted alicyclic compound, suppose if I'll write a compound, see here, this is a cyclic compound. If I'll write benzene here, okay, and if I'll put a compound, suppose chloro, so it is a chlorobenzene. अगर क्लोरोबेंजीन का पोजीशन आप यहाँ पे लगाओ या मैं यहाँ पे लगाऊंगी, राइट, यहाँ पे क्लोरीन लगाऊँ, राइट, या मैं यहाँ पे लगाऊँ, अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, सी इसका भी क्लोरोबेंजीन, आप जहाँ पे प्रेजेंस आप इसको 1 पोजीशन ही देना, ये भी 1, क्योंकि 1 है सब्सटीट्यूएंट मीन्स ऑलवेज गिव द पोजीशन नंबर 1 टू दिस। सो यहाँ पे आपका पोजीशन चेंज नहीं हो सकता, डाई सब्सटीट्यूशन आएगा तभी आपका पोजीशन आइसोमर यहाँ पे चेंज होगा। इसलिए मोनो सब्सटीट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एनी कंपाउंड नॉट ओनली इन बेंजीन, इफ आई राइट ए कंपाउंड लाइक दिस एंड यहाँ पे क्लोरो लगाती हूँ, ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, ये क्लोरो को उठा के यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, जहाँ पे भी लगाओ आपका सेम ही रहेगा। इसीलिए कोई भी मोनो सब्सटीट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड दे डू नॉट शो पोजीशन आइसोमर। दैट इज another important point. Third one is chain and position isomerism cannot be possible. Chain and position isomerism cannot be possible. Okay. Chain and position isomerism cannot be possible together. Cannot be possible together between two isomeric compounds. दो आइसोमेरिक कंपाउंड अगर आप लिख रहे हो, जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका चेन एंड पोजिशन आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर। एक ही कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में आप चेन भी पोजीशन भी दोनों नहीं दिखा सकते, आइदर चेन दिखा सकते हो या पोजीशन दिखा सकते हो। वन इज चेन आइसोमर्स टू अनदर एंड पोजीशन आइसोमर्स टू अनदर, ये डिफरेंट होगा, राइट।